कंटिन्यू कर रहे हैं लिमिट्स में, और लिमिट्स में जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है दैट इज कॉन्टिन्यूटी. So topic name is just limits. It is also you can say continuity. Continuity का कंसेप्ट मैं आपको करवा चुका हूं. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ continuity इज fx is equal to 4x minus 1 the cube upon sin x by 4 log 1 plus x square by 3 is continuous everywhere, is continuous everywhere, then f0 equal to, then f0 is equal to a3 log 4 the power 3, b 4 log 4 the power 3, c 12 log 4 the power cube, d 15 log 4 the power cube. Now how we proceeded for this question? यहां पर हम वही देखेंगे कि this is since fx is continuous everywhere, since fx is continuous everywhere, that means limit x tends to 0, fx must be equal to f of 0. Limit x tends to 0. This is equal to 4dx minus 1 cube upon sin x by 4 log 1 plus x square by 3. This is equal to f of 0. I can say this is f of 0 is equal to, this is 4 the power limit x tends to 0. This is 4dx minus 1 upon x the whole cube into x cube upon sin x by 4 over x by 4 into x by 4. Now it comes out to be into. Now x square by 3 है, I can say it is x square by 3, 3 upon x square into log 1 plus x square by 3. यहां पर आ जाएगा it will become f0 is equal to limit x tends to 0. This is equal to 4dx minus 1 upon x the whole cube. Now I can say this is x cube upon sin x by 4. Here also I can write down limit x tends to 0. Sin x by 4, x by 4. This comes out to be x cube upon 12 into log 1 plus x square by 3. This 3 over x square will come over here. Now it will become, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, f0. This is equal to log of 4 the whole cube. First of all, x cube will be cancelled out. It becomes log 4 the power 4 upon 1 into 1 by 12 into log of e
This is equal to 12 log 4 the power cube log e is equal to 1. So the right answer is C part. नाउ एक बार फिर समझ ले इस क्वेश्चन में, इसमें कौन कौन से फार्मूलेज लगे। इसमें पहली बात इंपॉर्टेंट थिंग इज एक फार्मूला लगा है लिमिट x टेंड टू 0, a the power x minus 1 over x, this is equal to log of a. Formula number 2, limit x tend to 0. It is, I can write down here limit x tend to 0 log 1 plus x the power 1 over x is equal to log of e is equal to 1. And here sin x over x is equal to 1. So एक बार मैं शुरू से explain कर रहा हूँ कैसे हमने किया. This term was given to be continuous. This function is given to be continuous. It means this must be equal to f of 0. So f of 0 इसका मतलब है हमने इस लिमिट को इवेल्युएट करना है. अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इसमें से दे रखा है कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल फेल हो जाए, आप अप्लाई ना कर सके. फेल होने का मतलब है काफी लेंथी हो जाएगा जब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे. सो द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड इज इसको एक्चुअल मेथड से करो. एक्चुअल मेथड 4dx माइनस 1 है, अपॉन एक्स ला के अपॉन एक्स एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, x by 4 से मल्टीप्लाई, 3 over x पावर में चाहिए तो मल्टीप्लाई x square by 3 into 3 by x square. Now it becomes x cube, this one, and this is, it becomes this one. This whole becomes log e, this becomes 1, this becomes log 4, x cube cancel out. We got C part is our answer. Now the next problem of continuity is, fx is equal to x e the power minus 1 upon modulus x plus 1 upon x. This is if x not equal to 0, 0 if x is equal to 0. Then A option is limit x tends to 0 fx exists. B is limit x tends to 0 fx do not exist. Fx is discontinuous. Discontinuous as left hand limit is equal to right hand limit. Fx is discontinuous but left hand limit is equal to right hand limit. Here we can say the first part wants to say fx is equal to discontinuous, fx is equal to fx say does not exist. Left hand limit is not equal to right hand limit. Then C part is, it is fx is continuous. D part none of these. So we have to check the continuity. उसके लिए हम क्या करेंगे, it is left hand limit है, put x is equal to 0 minus h, 0 minus h, h tends to 0, h greater than 0. This equal to, it is limit h tends to 0, minus h e the power minus 1 upon minus h modulus plus 1 upon minus h. This is limit h tends to 0, it is minus h e the power minus 1 upon h minus 1 upon h, cancel out हो जाएगा. It becomes e the power 0 minus h, it is 0. Then it comes out to be right hand limit. Right hand limit में आएगा, it is put x is equal to 0 plus h, h tends to 0, h greater than 0. We have to substitute over here only. It becomes limit h tends to 0, h into e the power minus 1 upon h plus 1 upon h. It comes out to be limit h tends to 0, h upon e the power 2 upon h
Now it comes out to be, it is h, it is limit h tends to 0, h into 1 upon e the power 2 upon h, it is 0 into h की जगह 0 पुट कर देंगे 1 upon infinity, 0 into 1 upon infinity, 0 1 upon infinity is 0, it comes out to be 0. So the right hand limit, it comes out to be 0. Now I can say left hand limit is equal to right hand limit. So left limit x tends to 0, fx, x tends to 0, fx exists. Now f of 0. f0 is given to be 0. इसका मतलब I can say limit x tends to 0 minus fx, limit x tends to 0 plus fx. This is f of 0. I can say fx is continuous. Fx is continuous, and the right answer is, it is C part. Now the next question of continuity is fx is equal to sine a plus 1x plus sine x over x less than 0, c x is equal to 0, x plus bx square minus root x bx into root x, x greater than 0. This is continuous at x is equal to 0. Then A option is A is minus 3 by 2, B is 0, C is half. B option is A is minus 3 by 2, B is 1, C is minus half, C is A is equal to minus 3 by 2, B belongs to R, C is equal to half, D, it comes out to be none of these. Now these four options we have been given out. तो सबसे पहले we go for left hand limit, that is left hand limit x tends to 0 minus. Now 0 minus है, इसका मतलब है put x is equal to 0 minus h tends to 0, h greater than 0. सबसे पहले 0 minus है, 0 minus में जो फंक्शन लेंगे that is x less than 0, ये वाला फंक्शन है. I can say limit h tends to 0, sine a plus 1 into minus h plus sine minus h upon minus h, limit h tends to 0, sine minus, it is a plus 1h plus sin h upon h. It comes out to be minus, limit h tends to 0, sin a plus 1h upon h, it is a plus 1 multiply a plus 1 over here plus sin h over h. And negative ऊपर से कॉमन लिया, नेगेटिव नीचे से कॉमन लिया, it should be positive over here. Now it becomes limit h tends to 0. It becomes, this whole term is 1. This is a plus 1 plus 1. It comes out to be a plus 2. Then it comes out to be right hand limit. Right hand limit हो गया limit x tends to 0 plus. 0 plus में जो function होगा this one. Put x is equal to 0 plus h, h tends to 0, h greater than 0. Put x is equal to 0 plus h, I got it what? Limit h tends to 0. This is h plus bh square minus root h upon bh into root h. Now the thing is, I just take it root h common from here. यहाँ पे रह गया 1 plus bh minus 1 upon
bh into root h, this will be cancelled out. I am left with limit h tends to 0, 1 plus bh the whole power half minus 1 upon bh. This is bh. Now I can say limit h tends to 0. 1 plus bh the power half minus 1 the power half, 1 plus bh minus 1. This is equal to half into 1 the power half minus 1. This is equal to half. So it means left hand limit is equal to right hand limit. Say अब मैं आ रहा हूं, पहले एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं एंडिंग करूंगा. देखो हमें गिवन था x पे 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई, a प्लस 1 से डिवाइड, उसके बाद बन गया ये a प्लस 2 हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट. 0 प्लस पुट किया h और ये बन गया. अब स्टूडेंट्स दिस इज अ स्टेप टू बी नोट डाउन. आई कैन से दिस इज स्टेप टू बी नोट डाउन. आई कैन से दिस इज अ स्टेप टू बी नोट डाउन. इसके बाद रूट एच कॉमन ले लो, ये ध्यान रखना है. 1 प्लस बी एच माइनस 1 रूट एच कैंसिल आउट. नाउ यहां पे फॉर्मूला किया था एक्स डी एन माइनस ए डी एन वाला, इट इज हाफ आ गया. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to right hand limit should be equal to f of 0 as fx is given to be continuous. Left hand limit is a plus 2 should be equal to half, f of 0 is c. So यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं c is equal to half, a is equal to minus 3/2. b यहां पे इलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, b belongs to real. B automatically eliminates over here, so answer comes out to be a minus 3/2. a minus 3/2 तीनों में दे रखा है. B belongs to real, इसका मतलब है this one. C is equal to half, तो C part is our answer. अब मैं आ रहा हूं बुकलेट का. हमारा बुकलेट का नई प्रॉब्लम है, नई क्वेश्चन है. दैट क्वेश्चन इज ये देखो, एक आते साथ जो था मैंने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 मैंने मार्क नहीं किया था. क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव डन इट विद यू. और उसका जो 22 का आंसर आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी डी पार्ट. इट इज नन ऑफ दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी, आई एम जस्ट डूइंग इट ओवर हियर. Question number 23 of our booklet. Question is fx is equal to log 1 plus ax minus log 1 minus bx upon x is not defined at x is equal to 0. The value which should be assigned to make it continuous at x is equal to 0 is A option is a plus b. A option is a minus b. B option is a plus b. C option is log a plus log of b. D option is none of these. देखो हमें गिवन है this function is not defined at x is equal to 0. So to make it continuous, say if this is to be continuous, limit x tends to 0 fx must be equal to f of 0. So f of 0 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, वो आएगी लिमिट x tends to 0 जब fx को सॉल्व कर लेंगे. So I can say f of 0 is equal to limit x tends to 0, it is log
1 plus ax minus log 1 minus bx whole by x. I can say f0 is equal to limit x tends to 0. Log 1 plus ax over x log 1 minus bx upon it is minus x. f0 is equal to limit x tends to 0. Log 1 plus ax upon ax into a. It comes out to be plus log of 1 minus bx into minus of b. It comes out to be, now we know limit x tends to 0. It is log 1 plus x to the power 1 over x, or limit x tends to 0. Log 1 plus x over x is equal to e. This is also equal to e. This is equal to log of e, and this is not e. This is log of e. This is also log of e. So it comes out to be f0 is equal to log of e into a plus log of e into b. The value of log e is 1, so it comes out to be a plus b. This is f of 0. So इस क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है? This question can be modified as fx is equal to log 1 plus ax minus log 1 minus bx upon x. This is when x not equal to 0, and it is a plus b if x is equal to 0. So this way we can modify it. I can say the right option is B part. The next problem of our booklet is this is question number 25th. Question number 25th is given y is equal to 1 upon u square minus plus u minus 2, where u is equal to 1 upon x minus 1. Then function is discontinuous at x is equal to minus 1, b x is equal to half, c x is equal to 5, and d it comes out to be x is equal to minus 2. Now important thing is to find the discontinuous, say to find, the rule is to find the point of discontinuity. To find a point of discontinuity, we find out domain of function, the points which do not contain, the points which do not be a part of domain. To find the points of discontinuity, we find out domain of the function. The points which do not be a part of domain are the points of discontinuity. बेसिकली हम ये कहते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी. इसका मतलब है हमें निकालना पड़ेगा यहां पर एक्चुअल फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन. उसके बाद जिस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, जो पार्ट डोमेन में नहीं आता, वही पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा? इट विल बी डिसकंटिन्यूअस.
Now the question is, it is y matlab I can say it is f of x. F of x is equal to 1 upon u square plus u minus 2. U is equal to 1 upon x minus 1. I convert into form of function, proper function. This is 1 upon x minus 1 the whole square. 1 upon x minus 1 minus 2. I can say I take the LCM, x minus 1 the whole square will go in the numerator. 1 plus x minus 1 minus 2x minus 2 plus 4x. This can be written as x minus 1 the whole square upon 1 and 1 will be cancelled out. 4x plus x 5x minus 2x, 3x minus 2. This is our function. Again I just check it out. It is, this is एक मिस्टेक हो गया. I have to check it out over here. एक बार मैं दोबारा चेक कर रहा हूं. यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया x माइनस 1, यहाँ पे आएगा माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 2x स्क्वायर. तो नीचे क्या बन जाएगा? It becomes x minus 1 the whole square upon minus 2x square plus 5x minus 2. So our function reduces to fx is equal to x minus 1 the whole square upon. It is minus 2x square minus 5x plus 2. Fx can be written as x minus 1 the whole square minus x minus 2 into 2x minus 1. मैंने क्या बताया था अभी आपको? जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे? जिस पॉइंट, जो पॉइंट डोमेन में नहीं आते, मतलब जैसे x is equal to 2, x is equal to half are not the domain, are not the domain of fx. So point of, so these are the points I can say. So points of discontinuity of fx are these are x is equal to 2 and x is equal to half. जब हम इन दो पॉइंटों को चेक करेंगे, इन पॉइंट पर फंक्शन क्या आएगा हमारा? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन इस पॉइंट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता. So the right option we look upon x is minus 1, x is half, x is 5, x is minus 2. X is equal to 2 is not given. So only option is given as B, x is equal to half. The right answer is B part. So question number 25th की right option है B part. Now the next question of continuity is, it is a question number 31 of our booklet. The question is fx is equal to x plus a root 2 into sin x. 0 x it is pi by 4. Now 2x cot x plus b. Pi by 4 it is x, it is pi by 2. Then a cos 2x minus b sin x. This is pi by 2, x is pi. The four options we have been given out. A is minus pi by 6, b is equal to minus pi by 12. A is pi by 6, b is pi by 12. C option is a is pi by 6, b is minus pi by 12. D is a is minus pi by 6, b is pi by 12. Now पहले क्या निकालेंगे? At x is equal to pi by 4. Left hand limit, put x is equal to pi by 4 minus h tends 0, h greater than 0. इसे हम पुट करेंगे इसमें, because less than pi by 4 ये है फंक्शन. It is pi by 4 minus h plus a root 2 sin pi by 4 minus h
limit h tends to 0. This is pi by 4 plus a root 2 into 1 by root 2 as h approaches 0. यहाँ और यहाँ पर मैंने h की जगह 0 पुट कर दिया. I got it pi by 4 plus a. Now I can say right hand limit. Put x is equal to pi by 4 plus h. H tends to 0, h greater than 0. Limit h tends to 0. This is pi by 4 plus h, it is 2. Pi by 4 plus h cot pi by 4 plus h plus b. This is pi by 2 cot pi by 4 plus b. I can say this is equal to pi by 2 plus b. Since f is continuous at x is equal to pi by 4. So left hand limit is equal to right hand limit. Pi by 4 plus a is pi by 2 plus b. A minus b is equal to pi by 4. This is the equation number 1. पहले हमने निकाला at x is equal to pi by 4. फिर करेंगे put at x is equal to pi by 2. Left hand limit, put x is equal to pi by 2 minus h. It is h tends to 0, h greater than 0. Limit h tends to 0. Pi by 2 minus h इसमें put करेंगे, it is 2. Pi by 2 minus h cot pi by 2 minus h plus b. Now cot pi by 2 is 0, this whole term 0, it becomes b. फिर आ जाओ right hand limit. Put x is equal to pi by 2 plus h, h tends to 0, h is greater than 0. Limit h tends to 0. It will be a cos, this is equal to 2 pi plus 2h minus b sine. It is pi by 2 plus h. Now h tends to 0, it becomes, it is a minus a, it comes out to be minus a cos 2h minus b cos h. This is equal to minus a minus b. So we got two equations. यहाँ पे भी यही आ जाएगा. It comes out to be left hand limit is equal to right hand limit. ये बन जाएगा. It comes out to be b is equal to minus a minus b. A plus 2b is equal to 0. Now एक इक्वेशन बन गई a plus 2b is equal to 0. एक बन गई a minus b is equal to pi by 4. Solve करेंगे, we got it. A is equal to pi by 6 and b is equal to minus pi by 12. So the right option we got it. It is C part, a pi by 6, b minus pi by 12. So question number 31 का the right option is C part. आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक जो कॉन्टिन्यूटी के बाद आता है एंड द टॉपिक इज डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मेथड क्या है? बेसिकली कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि वेयर कर्व इज बीइंग ब्रोकन, कर्व कहां पे टूट रही है, दैट आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी मतलब अ कर्व इज कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. दिस इज मीन्स कर्व इज कॉन्टिन्यूस. देन वी टॉक अबाउट अ डेरिवेटिव या इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, एक ही बात है. डेरिवेटिव का मतलब होता है वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट वेरी पॉइंट. ये वाला टेंजेंट हो गया, ये वाला टेंजेंट हो गया, ये वाला टेंजेंट, here it is a tangent, here it is a tangent. So we can draw a tangent. Now we have to check it out कि किस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. एक बात श्योर है,
जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं इज वन थिंग इज श्योर कि उस पॉइंट पर फंक्शन दैट फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस. दैट मीन्स इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस. अब आ जाओ डेरिवेबिलिटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करने का क्या मेथड है. फॉर डिफरेंशिएबिलिटी for differentiability, limit x tends to a minus fx minus fa upon x minus a must be equal to limit x tends to a plus fx minus fa over x minus a. Left hand derivative must be equal to right hand derivative. For differentiability, left hand derivative must be equal to right hand derivative. This is a condition for differentiability. Now I just take it one example. पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं. चेक द डेरिवेबिलिटी, check the derivability of fx is equal to modulus x at x is equal to 0. उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आ जाओ, क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0. 0 माइनस में ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉडुलस x माइनस f of 0. We know if f of x is modulus of x, f of 0 will be equal to 0. This is 0 minus, it is 0 upon x minus 0. Now put x is equal to 0 minus h, h tends to 0, h greater than 0. Put x is equal to 0 minus h, we got it, limit h tends to 0. 0 minus h modulus minus h, limit h tends to 0, h upon minus h, it comes out to be minus 1. So left hand derivative, it comes out to be minus 1. Now we go for right hand derivative. Formula is limit x tends to 0 plus fx minus f0 upon x minus 0. That means यहाँ पर fx क्या होगा, this will be same modulus x f0 0 upon x. Put x is equal to 0 plus h, h tends to 0, h greater than 0. It comes out to be, it becomes limit h tends to 0. It is modulus h upon h, it comes out to be 1. So here I can say left hand derivative is not equal to right hand derivative. Condition for differentiability is कि left hand derivative must be equal to right hand derivative and limit, इसका मतलब क्या आ जाएगा, fx is not variable at x is equal to 0. fx is not variable at x is equal to 0. I just check, I'll do it the next, I take up the next question. Next question is question. Fx is equal to x cube, x less than equal to 2, x square plus 4, x greater than 2. Then A option we have fx is variable at x is equal to 0. B option is fx is continuous but not variable at x is equal to 0. C option is fx
is neither continuous nor variable. Neither continuous nor variable. D is fx is, it is fx is not continuous but variable. इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था वो किया था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स. उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मैंने फार्मूला लगाया था लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड टू जीरो, बिकॉज पूछा गया था एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो मैंने लगाया था जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो. राइट हैंड डेरिवेटिव का मैंने फार्मूला लगाया था लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो. मैं अभी इस क्वेश्चन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसके बारे में बता रहा हूं थोड़ा सा. ये एफ एक्स इज इक्वल मॉडुलस एक्स, ये हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाया था, ये हमने राइट हैंड डेरिवेटिव लगाया था. अब इसको इफ वी गो बाय ग्राफिकल मेथड, इफ वी गो बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड का मतलब हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होगा, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड आई कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू इट इज एक्स if x greater than equal to 0. It is fx is equal to greater than 0 is x, 0 if x is equal to 0, minus x if x less than 0. जब हम इसका जनरलाइज ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे ये fx is equal to, fx मतलब y, y is equal to x, ये ग्राफ बन रहा है, it is, this is y is equal to x, x greater than 0. ये ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन जीरो. और ये अल्टीमेट, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द पॉइंट ओरिजिन. सो दिस इज अ जनरलाइज ग्राफ ऑफ मॉडुलस एक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि अब ग्राफ से हम कैसे कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट वेरिएबल एट द पॉइंट्स, at the points where graph is, at the points where graph is pointed one, like this way, this is at the points where graph is pointed one or V shape. At those points function is not variable, it is not differentiable. सो इसका मतलब है जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है, हम ग्राफ को देख के कह सकते हैं कि ये फंक्शन जिस पॉइंट पर पॉइंटेड ग्राफ बन रहा है वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है. ये मैंने पिछला क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से किया है. बेसिकली मैं एक कंसेप्ट आपके माइंड में डालना चाहता हूं कि ग्राफिकली ऑन लुकिंग अपॉन द ग्राफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन लुकिंग अपॉन द ग्राफ on looking upon the graph we can see the points of continuity and differentiability directly. Let graph is, सपोज हमें ये ग्राफ दे रखा है,
suppose this is a point, this curve is continues everywhere. This curve is continuous everywhere, but not variable at 1, 2, 3, 4. इन पॉइंट्स पे फंक्शन एट above appointed points, 4 पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, अदरवाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल अदर पॉइंट्स. अबाउट अ फंक्शन कॉन्टिन्यूटी, इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर. सो एकदम जहां पर भी किसी भी ग्राफ में जहां पर पॉइंटेड ग्राफ बन रहा हो, इस पॉइंट पर और इंक्लूडिंग एंड पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर फंक्शन हमेशा क्या होता है, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल. सो अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं आपके सामने. कुछ क्वेश्चंस ग्राफ ड्रॉ करने से डायरेक्टली हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको पार्ट लिखवाया है, ये थिंक करवाया है. अब आ जाओ इसका सॉल्यूशन आ जाओ. पहले हम करते हैं डेरिवेटिव. डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, यहां पर fx क्या लेंगे, 2 माइनस है तो विल टेक द fx एज x क्यूब माइनस f of 2 is equal to 8, it is 8 upon x minus 2, limit x tends to 2 minus x minus 2, x square plus 4 plus 2x upon x minus 2. x की जगह 2 पुट कर देंगे, पुट I can say it is put x is equal to, this is 2 minus h tends to 0, h greater than 0, limit h tends to 0, it is 2 minus h the whole square plus 4 plus 2 into 2 plus h. This comes out to be 4 plus 4 plus 4, this is equal to 12. This is the left hand derivative. Now we come to the left and right hand derivative. Left and right hand derivative में आ जाएगा limit x tends to 2 plus fx minus f2 upon x minus 2. Limit x tends to 2 plus fx is, अब 2 प्लस है तो यहां पर जो फंक्शन लेंगे वो x ग्रेटर देन 2 वाला लेंगे, दैट इज यहां पर fx विल बी x स्क्वायर प्लस 4. क्या होता है जब x 2 प्लस है, x की वैल्यू 2 से थोड़ी ज्यादा है, 2 से थोड़ी ज्यादा है तो मतलब x ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन लेंगे हम. f2 की वैल्यू सेम रहेगी, इट इज x माइनस 2, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, limit x tends to 2 plus x plus 2 into x minus 2 over x minus 2. 2 plus 4, it is 4. So we say left hand derivative is not equal to right hand derivative. Left hand derivative is not equal to right hand derivative. So function fx is not differentiable, not variable. Then it comes out to be, for continuity, left hand limit put x is equal to 2 minus h tends to 0, h greater than 0, limit h tends to 0, 2 minus h the whole cube is equal to 8. Right hand limit, put x is equal to 2 plus h tends to 0, h greater than 0, 2 plus h will put it 2 plus 2 minus h put किया था जिसमें x less than 2 था,
2 प्लस एच पुट करेंगे जिसमें राइट हैंड लिमिट में इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 plus 4 the whole square plus 4, it is 4 plus 4, it comes out to be 8. So I can say here left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 2. F of 2 is also equal to it. So fx is continuous. Fx is continuous but not variable. But not variable. So this function fx is not is continuous. The right option is B part. Fx is equal to x sine 1 over x if x not equal to 0. 0 if x is equal to 0. A part continuous but not variable. C variable at x is equal to 0. C part discontinuous but variable. It is neither continuous not differentiable, not variable. Neither continuous, not variable. It is left hand derivative. It is limit x tends to 0 minus. It comes out to be, it is, this is equal to fx minus f0 upon x minus 0. It becomes limit x tends to 0 minus x sine 1 over x minus 0 upon x. This is x sine 1 over x. And जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे it comes out to be sine 1 over x. This x and x will be cancelled out. Limit x tends to 0 minus sine 1 over x for x sine 1 over x, sine 1 over x oscillates between minus 1 and 1. जब लिमिट x टेंड टू 0 माइनस है x की वैल्यू 0 से थोड़ी कम है sin 1 over x oscillates between minus 1 and 1. I can say left hand derivative does not exist. So similarly right hand derivative limit x tends to 0 plus it is fx minus f0 upon x minus 0. Limit x tends to 0 plus x sine 1 over x upon x, it is positive. Same right hand derivative do not exist. That means function is fx is not variable. That means function is not variable. Then it comes out to be left hand limit. It is limit x tends to 0 minus it is x into sine 1 over x. X sine 1 over x, put x is equal to 0 minus h tends to 0, h greater than 0. It is 0 into finite value between. It comes out to be, first of all, it is minus h sine and minus 1 over h, it is h sine 1 over h. 0 into finite value between minus 1 and 1, answer comes out to be 0. Then it comes out to be right hand limit. Limit x tends to 0 plus हम क्या करेंगे put x is equal to 0 plus h tends to 0, h greater than 0.
it is limit h tends to 0. It is h sin 1 over h, 0 into finite value, that means 0. So I can say this is also 0. So it is continuous. The result is continuous but not variable. So the answer comes out to be A part over here. अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको, द रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये पॉइंट्स हैं, द रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड relation between continuity and differentiability. Continuity and differentiability. Relation between continuity and differentiability. पहला पॉइंट है, if a function is differentiable या derivable, if a function is derivable at certain points, then function must be continuous on those points. If a function is variable at certain points, then function must be continuous on those points. Generally, continuity is checked in close interval. Generally, continuity is checked in the closed interval, but derivability is checked in open interval. Because a function is never differentiable. A function is never differentiable at its endpoints. Because a function is never differentiable at its endpoints. Important thing, एक फंक्शन कभी भी एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता. नाउ द नेक्स्ट थिंग इट इज, सी इसका मतलब है हम जब कोई भी फंक्शन ड्रॉ करेंगे, इट इज even if this is a continuous function, clearly this is x is equal to a, this is x is equal to b, this is a continuous function, from a to b, but not variable at its endpoints. डिफरेंशिएबिलिटी का पहले ही मैंने मीनिंग समझाया था. डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग होता है क्या हम एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. यहां पर जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना हो, वी कैन ड्रॉ इट, बट एट द एंड पॉइंट्स नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. इस दोनों एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट can't be drawn. So that's why function is not variable. And in pointed graph, and points where
fx is, the graph is pointed one, and points where graph is pointed, पॉइंटेड वन का मतलब है जहां पे चोंच सी बनी हो, तुम इस वे से आई कैन से दिस इज, these all points are points of discontinuity. They are, sorry, non-differentiability. These are the points, and the points where graph is pointed are points of non-derivability, are points of non-derivability. So एक तो एंड पॉइंट पे फंक्शन डेरिएबल नहीं होगा, और जहां पर पॉइंटेड ग्राफ बना होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई कैन से because at this point there are two tangents, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट, एट दिस पॉइंट देयर आर टू टेंजेंट्स, but at one point we know, at one point only one tangent can be drawn, only one tangent can be drawn. So इसीलिए इन पॉइंटेड फंक्शंस, दीज पॉइंटेड, जहां पर पॉइंटेड ग्राफ बना होता है वहां पर फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डेरिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल. सो पहला पॉइंट होता है, इफ ए फंक्शन इज डेरिएबल एट सर्टेन पॉइंट देन फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस. Second point is generally continuity is checked in the closed interval, but differentiability is checked in the open interval, because a function is never differentiable at its endpoints. Third point is if a function is continuous, then it may or may not be variable. If a function is continuous, then it may or it may not be variable. If a function is continuous, then it may or may not be variable. तो इसका मतलब है, फोर्थ पॉइंट इज, इससे क्या कंक्लूजन हमारा निकला, जब भी क्वेश्चन हमें दिया होगा तो पहले क्या निकालेंगे, पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे. अब इन पिछले जो से मैंने दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों में डिफरेंशिएबिलिटी चेक की है. क्यों? क्योंकि जब डिफरेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाएगा तो इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस. यदि कॉन्टिन्यूस आ भी जाता है तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑलवेज चेक करनी पड़ेगी. लेकिन इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल तब हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है. सो इसमें यही पॉइंट मैं लिखवाना चाहता हूं. से इन प्रॉब्लम्स first of all we calculate differentiability. First of all we calculate differentiability in problems. First of all we calculate differentiability, and then if it is required, if it is not differentiability, if it is not variable, then we check continuity. This is point number 3. Point number 4, fx is equal to x minus 1 plus x minus 2 are the functions fx is equal to modulus of x minus 1, x minus 2 are the functions which are continuous, everywhere, but
not variable, but not variable at x is equal to 1 and x is equal to 2. Otherwise, variable at all other points. जब ये फंक्शन हमसे पूछे x इज इक्वल टू 3 पे, वो 3 पे डेरिएबल होगा, 4 पे डेरिएबल होगा, सिर्फ 2 पॉइंट पे फंक्शन डेरिएबल नहीं है, दैट इज एट x इज इक्वल 1 एंड 2. हम यदि चेक करते हैं 1 एंड 2, f1 की वैल्यू आ जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 1, f2 की वैल्यू इट कम्स आउट टू बी 1. दिस इज अ ग्राफ, it goes up to graph this one, and it goes it like this way. So in दोनों पे बन रहा है pointed graph. So this function is not variable at x is equal to 1 and this is at x is equal to 2. So this is the basic relation between continuity and differentiability.